So students, in this video we can understand the different types of systems work in internal combustion engine for the lubrication of the engine components. The first important system is called the petrol lubrication system. So petrol lubrication system is very popular in two-stroke spark ignition engine. In this, the air-fuel mixture passes through the crankcase on its way from the carburetor to the engine cylinders. So in this, we are using the special grade oil that is called the 2T oil, and the property of 2T oil is freely mixed with the petrol. So during the ignition of the air-fuel mixture, that 2T oil not too much create the problem or increase the viscosity level of the petrol, and the spark plug is produce the sufficient quantity of electrical discharge which able to burn the air fuel mixture which mix with the oil. So this is almost called the gravitational lubrication system also, because ये अपने आप उसके अंदर जाता है थ्रू द कार्बोरेटर. इसको कोई भी अलग से पंप सिस्टम से फोर्सफुली हम सर्कुलेट नहीं करते हैं. The second system is called the weight sump lubrication system. Weight sump lubrication system तीन तरीके के होते हैं. पहला सिस्टम होता है splash pressure feed and combination of these two. So splash system जो होता है स्मॉल 4-स्ट्रोक इंजन में हम लोग यूज करते हैं इसको, जैसे लॉन मूवर्स हो गया, गोल्फ कार्ट हो गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें लगातार ड्राइव नहीं करना है व्हीकल को, शॉर्ट डिस्टेंस चलना है, फिर रुकना है, फिर चलना है. तो ये बहुत सिंपल फंक्शन होता है. जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, एक ऑयल चैम्बर के अंदर जो ऑयल स्टैनर रहता है और ऑयल पंप रहता है. जो ऑयल पंप है वो ऑयल स्टैनर के थ्रू ऑयल को सक करेगा. सक करने के बाद वो एक छोटे छोटे कप्स बने हुए हैं, क्रैंकशाफ्ट का जो मेन एंड बैरिंग रहता है उससे टच करता हुआ बना रहता है. तो जितनी बार पिस्टन टॉप डेट से बॉटम डेट आएगा, मतलब क्रैंकशाफ्ट सर्कुलेट होगी, वो पिस्टन का जो कनेक्टिंग वाला लोएस्ट पार्ट होता है वो जिस पॉट में या बाउल में ऑयल भरा है उसको टच करता हुआ ऊपर की ओर फिर जाएगा. तो जिससे क्या होता है, ऑयल स्प्लैश होता है, उछलता है और पूरे सर्किट में फैलता है. लेकिन मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि ये सिस्टम सिर्फ एक लो स्पीड इंजन या शॉर्ट डिस्टेंस पे जो व्हीकल चलता हो उनके लिए मोस्ट सूटेबल है. और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है, वहीं का वहीं छोटे एरिया में ये प्रॉपर वे में लुब्रिकेट कर देता है. The next is that the oil is pumped by low pressure oil pump from the large capacity of oil sump to small through placed under each connecting rod. Oil levels in this through are maintained constant by supplying excess of oil and providing an overflow to each through. The caps on the big end bearing of the connecting rods are usually provided with scopes or dippers. When the piston reaches BDC, the corresponding connecting rod scoop dips into the through and directs the oil through a hole in the cap to the big end bearings. Big end bearings, small end bearing जो हमारा connecting end को hold करता है ब्लॉक के साथ और piston की connecting rod के साथ. So from the scoop, the oil is splashed to all engine parts required to be lubricated, including main bearings, camshall bearing, lower portion of the cylinder walls, piston, wrist pin or gudgeon pin, valve, timing gears and cam follower mechanism which is used for the operate the valve timing. The surplus oil eventually returns into the oil sump by gravity for recirculation purpose. The next one is the pressure feed system.
So pressure feed system is usually used for the high speed stationary engine or marine engines or all type of automobile engine. We can say that the 4-stroke engine also. So in this system, the high speed the oil is kept in an oil sump at the bottom of the crankcase. In this system, the engine parts are lubricated by oil fed from the oil pump at 2 to 4 bar pressure. The oil pump draws oil from the sump through an oil filter and then delivers to an oil gallery or header through an oil pressure control valve to maintain the desired pressure in the line. इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑयल कंट्रोल वॉल्व कि जैसे जैसे इंजन चलता है टेम्परेचर बढ़ता है तो हो सकता है विस्कोसिटी लेवल ऑफ ऑयल का वो क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन जिसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से वीक होता है तो विस्कोसिटी भी वीक होगी। विस्कोसिटी वीक होने से यदि हम प्रेशर मेंटेन ना कर पाए तो ऑयल देर से ऊपर पहुंचेगा और एवोपरेट होना शुरू होगा। इस वजह से हमें फ्लो कंट्रोल वॉल्व के माध्यम से इसके प्रेशर को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़े तब भी ऑयल का सर्कुलेशन प्रॉपर हो। सो फ्रॉम द मेन ऑयल गैलरी इट इज ब्रांच to the main and the different types of branches related with the camshaft bearings। मतलब हर camshaft का जहाँ लोब है, जहाँ वॉल ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, वहाँ वो छोटी छोटी ब्रांच के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा और प्रॉपर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। The header supplies the oil to the main bearings of crankshaft through the connecting passage. So from the main bearing, it is forced through the hole drilled in the crankshaft to the connecting rod bearings. So from the connecting rod bearings, the lubricant is forced through holes drilled in the connecting rod to the wrist pin. Through a passage in the camshaft bearing, the oil flows to the tappet bridges. Tappet जहाँ पे हम वॉल को प्रेस करते हैं खोलने के लिए, और टैपेट रॉकर आर्म्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है जहाँ पे वॉल बंद और खोलने के लिए कैमशाफ्ट और रॉकर आर्म ऑपरेशन क्रिएट करती है। So as the oil passage of the tappets and tappet bridges line up during the tappet motion, rocker arms and wall stem are pulse lubricated through the tappers and push rod. A typical automobile engine has oil passage built into the connecting rod, wall stem, push rod, rocker arm, wall seat, engine block and many other moving components. A diagram of this system is shown in figure. Again, जैसा आपका स्प्लैश सिस्टम में था वैसे क्रैंकशाफ्ट दिख रहा है, वैसे इंजन ऑयल पंप दिख रहा है जो इंजन के साथ क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है। फिर ऑयल स्टेनर दिख रहा है जो ऑयल स्टेनर का फंक्शन होता है कि ऑयल को किसी भी लेवल पे, चाहे इंजन मूविंग व्हीकल है, अप एंड डाउन स्टेयर पे है, तब भी वो लेवल को मेंटेन करेगा और ऑयल को लगातार सक करता रहेगा विद द माध्यम ऑफ द ऑयल पंप। और वहां से वो गैलरी जो बनी हुई है आप डायग्राम में देख रहे हैं, वो गैलरी से वो कैमशाफ्ट को भी जाएगा और क्रैंकशाफ्ट के स्मॉल एंड बिग एंड बेयरिंग्स को भी जाएगा और उसके साथ एक ऑयल प्रेशर स्विच भी रहेगा जो जैसे ही आप इंजन को चालू करेंगे ऑयल प्रेशर स्विच बंद हो जाएगा। The next system is called the splash and pressure lubrication system. It is the combination of both and third type of system. In this, the splash and pressure lubrication system both works at a time. It is more simple and less expensive to install than the complete pressure system. It enables higher bearing loads and engine speeds to be employed than those for the plain splash system. बहुत ज़्यादा engine speed पे भी आप इसको run कर सकते हैं। This system is applicable to medium speed stationary engine and the splash and pressure lubrication system is shown in figure. जो बेसिक आप डिफरेंस देख रहे हैं प्रीवियस सिस्टम से, तो सारे कंपोनेंट तो वैसे के वैसे रहेंगे। इसमें एक एडिशनल आपको ऑयल जेट लिखेगा जो आपको डायरेक्टली स्प्लैश आउट करेगा प्रेशर के थ्रू इंजन ऑयल को क्रैंकशाफ्ट के ऊपर एज वेल एज कैमशाफ्ट के ऊपर। इसमें मेंटेनेंस का एक ही कॉज रहता है कि जो स्लज बनता है ऑयल का, वो ऑयल
जो जेट रहता है उसके नोजल को बंद करता है, तो वो मेंटेनेंस आपको ध्यान रखना है। और इस सिस्टम में द ऑयल चेंजिंग जो पीरियड होता है वो थोड़ा जल्दी जल्दी होता है। In this system, the oil is drawn from the sump by means of a gear pump and then delivered to the main and camshaft bearings. The big end bearing of the connecting rod are lubricated by the splash system using scoops and troughs. Through slots cut in the lower ends of the connecting rod, and the other part of the engines are lubricated by splash or spray of oil thrown up by dippers. The next system is called the dry sump lubrication system. The aircraft engines and motorcycles involve changes in inclinations. Up and down होते हैं, level change होता है, और compact engines होते हैं. The surging of the relatively large quantity of oil in the sump would result in improper lubrication of the cylinders and increase frictional resistance. जैसा कि आपने देखा होगा प्रीवियस डायग्राम में कि सम्प में ऑयल है, लेकिन यदि व्हीकल आगे से झुक गया है तो स्टेनर तो पूरा डूबा हुआ है, लेकिन यदि अपोजिट डायरेक्शन में यदि आगे से लिफ्ट हुआ है तो ऑयल पीछे की तरफ चला जाता है, तो उस केस में स्टेनर ऑयल खींचना छोड़ देता है. So these disadvantages can be overcome by using a dry sump lubrication system as shown in next figure. So cylinders and bearings into the sump are constantly removed by an oil scavenging pump, then passed through a filter and returned to the oil reservoir. This reservoir is sometimes provided with cooler fins. मतलब हम एक तरीके से जैसा रेडिएटर के फिन्स होते हैं वैसे एक डिवाइस इसको पास करेंगे. और आप देखे होंगे अभी न्यू जनरेशन जितनी मोटरसाइकिल्स आ रही हैं उनमें ऑयल कूलर लगा रहता है इंजन से कि जस्ट थोड़ा सा सामने. If the filter becomes clogged, the pressure relief valve opens and permit the oil to bypass the filter. And the diagram shows the system, splash system, and another and small capacity of oil pressure pump draws its supply from the reservoir, and after passing the oil through a filter and oil cooler delivers it to the main big end and other bearings. So जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं ये एक बहुत कॉम्पैक्ट सिस्टम होता है जिसमें हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यूज करते हैं कोई भी लुब्रिकेशन सिस्टम हो. और वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नॉर्मली आपका वैन पंप हो सकते हैं, गियर पंप्स हो सकते हैं या लोब पंप हो सकते हैं, ताकि एक कांस्टेंट आरपीएम पे कंटिन्यू लुब्रिकेशन ऑयल को सप्लाई करते हैं. और सपोज कहीं भी सर्किट चोक होता है तो ये बैक प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाते हैं ताकि हमारा दूसरा सिस्टम डैमेज ना हो. So a pressure relief valve in this line maintains the supply pressure of oil constant. As the pressure rises above the set value, the relief valve opens and through this valve excess oil returns and release the pressure. So in this system the capacity of the scavenging pump is greater than that of the oil pump. So the oil is prevented from accumulating in the sump. मतलब किसी भी एक जगह वो स्टोर नहीं होगा, आप चाहे किसी भी सिचुएशन से व्हीकल को निकालें. The majority of engine using dry sump have a full pressure fed system. Thank you so much.